Hello, dear students. Good morning. Today we will discuss a grammar topic, and today's grammar topic is parts of speech. So, in English language, there are total 8 word classes or 8 parts of speech are there. Which are they? So, which 8 parts of speech are there in English language? So, first noun, second one is pronoun, third one is verbs, fourth one is adjectives, fifth one is adverbs, sixth one is prepositions, seventh one is conjunctions, and the eighth one is interjections. Now we see that what is noun. So, if in simple language we say that a noun is a नेमिंग वर्ड, मतलब नाउन क्या है? सो नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या जगह का नाम बताता है. सो नाउन इज अ वर्ड which names or refers to a person, animal, place, thing or idea. It is a naming word, means a noun suggests a name of any person, animal. So there are many types of nouns are there. For example, common noun, proper noun, abstract noun, collective noun, countable noun, uncountable noun. So these are the types of noun. Now here some examples of nouns are given. The words like students, Saroja, dog, city, Nagpur, computer, fridge, joy, truth and beauty all are nouns. Now amongst these example, some of are proper noun, some are common noun, some are abstract noun, some are countable, uncountable noun. So about the noun, previously we sent one word file to you all, and in that word file you have learned about in detail about the noun. Now we discuss about a pronoun. So what is pronoun? In simple definition, if we talk about pronoun, so a pronoun is a word which is used in place of noun. मतलब नाउन के बदले जिस शब्द का इस्तेमाल, नाम के बदले जिस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. मतलब नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, किसी का नेम सजेस्ट करता है उसको नेमिंग वर्ड. जैसे कि सरोजा, तो सरोजा एक नेम है तो वो नाउन है. लेकिन सरोजा एक गर्ल है और उसके लिए हम गर्ल के लिए अंग्रेजी में क्या प्रोनाउन यूज़, इंग्लिश में क्या प्रोनाउन यूज़ किया जाता है? तो सी. तो हियर सी इज अ प्रोनाउन. सो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. विच आर द प्रोनाउंस इन इंग्लिश लैंग्वेज? such as I, we, you, he, she, it, they, all are the pronouns in English language. So these pronouns are used in place of a noun. Now we discuss, let's move to a verb. So what is a verb? So in simple language we can say verb is an action word.
The word which shows any action is called verb. So as per the textual definition which is given here, a verb says what somebody or something does. Here example is given, it, or what happens, means here example is die, rain. A few verbs like be, remain and have describe a state or condition. So जैसे कि मैंने बोला कि वर्ब क्या है, तो वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी भी प्रकार की किसने, किस लिए, क्या प्रक्रिया की है, क्या हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बताता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रियापद। इन हिंदी लैंग्वेज और इन गुजराती लैंग्वेज हम बोलते हैं क्रियापद। तो क्रिया मतलब एक्शन, जो भी प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, जो एक्शन होती है, वो डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। Now let's move to an adjective. Now what is an adjective? In simple language we can say an adjective is a word which says or which describes noun and pronoun, which tells us more about noun or pronoun in detail. Adjectives tells us more about noun and pronoun in detail, more. So that word is called adjective. Many adjectives are there in language. So here, as per the textual definition of an adjective, so an adjective is a word which describes or says more about a noun or pronoun. Here some examples are given of adjective: clever, tall, hungry, interesting. For example, if I am speaking one language, one sentence, listen it carefully. Sneha is a tall girl. Sneha is a tall girl in my class. So in this sentence, which word says more or which word describes Sneha? What is her specialty? That she is tall. है ना? So here what is her specialty? The word which tells us more. So Sneha is a girl. It is often. है ना? Sneha is a girl. It is usual thing. But what kind of girl? So she is a tall girl in the class. So here tall. Tall is an adjective of Sneha. अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं, और एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताता है, हमें हमारे सामने उसको डिस्क्राइब करता है, हमारे सामने उसको क्या करता है कि हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि स्नेहा इज़ अ टॉल गर्ल इन माय क्लास, तो इसमें स्नेहा के बारे में एक बात बताई गई है कि स्नेहा गर्ल तो है, लेकिन कैसी गर्ल है, तो स्नेहा इज़ अ टॉल गर्ल इन माय क्लास। सो यहाँ पे टॉल जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि टॉल जो है वो स्नेहा के बारे में बताई गई बात है कि स्नेहा जो है वो सबसे ऊंची लड़की है हमारे क्लास में। नाउ we move to an adverb. Now what is an adverb? Adverb is also like an adjective, but different in some ways. Adjective describes more about noun or pronoun, but here
adverb is describe more about or gives us more information about verb. How, where and when, etc. For example, if we go through the textual definition of an adverb, so an adverb is a word that mainly describes or gives more information about a verb. So a word that mainly describes or gives us more information that how the thing is happen, when this thing is happen, where this thing is happen. Understood? So he writes. So he writes. It is a simple sentence. He writes. But what kind of his writings are there? Understood? What kind of his writing is there? So in this way we can say that verb tells us more about the noun, not noun, about the verb. I hope you understand what is an adverb. Now let's discuss about preposition. What is preposition? A preposition is a word like which is used before a noun or pronoun to show place, time and method. So preposition क्या है? तो preposition एक ऐसा शब्द है जो हमें नाउन और प्रोनाउन की परिस्थिति और स्थिति के बारे में बताता है। वो कहाँ पे है, कौन से टाइम पे है, क्या मेथड मतलब कौन सी रीत से क्या काम कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है। कई सारे प्रेपोजिशंस है। फॉर एग्जांपल ऑन, इन, एट, विथ, फॉर, अंडर, फ्रॉम एंड टू। दीज आर द examples of preposition. Now we move to a conjunction. What is conjunction? So conjunction here works as a favicol or favstick. What is the work of conjunction? So works conjunction is to join two words or sentences. So, as per the definition of conjunction, a conjunction is a joining word and it joins words or groups of words or two sentences. So, conjunction जो क्या है? तो conjunction जो है वो एक संयोजक है जिसका काम है एक वर्ड या ज़्यादा वर्ड को एक साथ जोड़ना. In English language, many conjunctions are there. And, but, yet, or, when, because, though, many conjunctions are there. Now, let's move to an interjection. What is an interjection? An interjection is a word spoken suddenly to express a strong feeling. मतलब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जब आप बोलते हो और उसमें बोलते समय अगर आपके अंदर रही कोई फीलिंग है और उसको बाहर लाते हो तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बाहर दिखाने के लिए जो वर्ड आप यूज़ करते हो उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. हुर्रे, हेलो, ब्रावो, ओ, आ, गोश, आउच, स, वाव, etc. are interjections. So these all eight parts of speech are here, and here are the definition of parts of
speech. In next video, we will discuss more about these parts of speech. Till that, thank you and have a nice day.